Hello everyone, we are back almost after a year and I really hope that everyone is doing okay. And not to forget that we are still in the middle of a pandemic which has taken a toll on everybody including us. So there was no better day to do a comeback than International Yoga Day. तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों Why is everyone talking about yoga like never before? From the government officials to the celebrities to the United Nations, everyone is promoting yoga these days. India has always been the hub of meditation and yoga, but if the pandemic has taught everyone around the world anything, then it has to be not to take our body and our mental health for granted. एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम सब एक ही जगह पे कन्फाइंड होके रह गए हैं. जिमिंग, साइकिलिंग या फिर स्विमिंग हैव बिकम ए ड्रीम फॉर मेनी ऑफ अस. और यहाँ हमारे एस्केप में आता है होम वर्कआउट वीडियोस. एंड आउट ऑफ ऑल द होम वर्कआउट वीडियोस फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट, योगा हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. ना आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत है. अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल योगा डे का ओरिजिन के बारे में. 11 दिसंबर 2014 को हमारे यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रपोजल दिया था टू सेलिब्रेट जून 21 एज इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर एंड ए रिकॉर्ड ऑफ 177 कंट्रीज सपोर्टेड द रेजोल्यूशन. एंड उसके बाद से हर 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. एंड द फर्स्ट एवर योगा डे सेलिब्रेशन वाज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. एंड वो जो इवेंट था वो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए थे. वी सेलिब्रेटेड द 7th एडिशन दिस ईयर एंड द थीम वाज योगा फॉर वेल बीइंग. दे से that yoga is beyond all the caste, creed, religion and nationalities. It is a way through which a human being can find his or her highest potential. Many people have ditched their corporate jobs and have taken up yoga as a way of living or as their profession. According to a recent report, हमारे एम्स के जो चीफ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया has said third wave of COVID would hit India in 6 to 8 weeks and we have to boost our immunity at any cost. Unless we are fully vaccinated, we are extremely vulnerable in the upcoming months. Apart from boosting our immunity, it also helps strengthening our core, muscle bones and in functioning our organs. So guys, please start doing yoga or any sort of exercises if you have not already. Stay home, stay safe and get vaccinated as soon as possible. Also guys, do not forget to subscribe to our channel and hit that like button if you find this video helpful.